Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. Starting with the first word for the day is cis or trans test. It is the analysis of the effects of two mutations present in cis and trans configuration on the expression of the concerned gene. अब cis और trans ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कहने का कि जैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना जीन्स, वो या तो सिस फॉर्म में होंगे या तो ट्रांस फॉर्म में होंगे। तो उसी में हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से आ रहा है। नेक्स्ट इज सिस्ट्रॉन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड, द यूनिट ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड बाय सिस ट्रांस और जनरली complementation test. Usually mutation within a cistron do not show complementation, in fact generally accepted as a synonyms for gene, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, एक सेगमेंट है डीएनए का, हम लोग इसको वो एक तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, दैट इज नोन एज सिस्ट्रॉन सिंपली। देन वी हैव क्लोन, मतलब क्लोन क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी। सो ऑल द इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल थ्रू asexual reproduction, that is produced by mitotic cell division. देन वी हैव कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड मतलब जिससे एक्चुअली हमारा प्रोटीन एमआरएनए के बाद प्रोटीन बन रहा है। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स दैट हैज़ द सेम बेस सीक्वेंस एज एमआरएनए, सिनोनिम्स मतलब इसको और सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। Next we have codominance. Both the alleles of a gene express themselves in the heterozygotes. That means अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो दोनों अपने आप को शो कर रहा है। कोड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉल ही आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है, एक बीच का हाइट आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव कोडॉन। अब कोडॉन वो होता है जो आपका फिर से आपका प्रोटीन को एक्चुअली कोड करता है। जनरली तीन न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है। ग्रुप ऑफ 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एमआरएनए विच कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड। नॉनसेंस कोडॉन स्पेसिफाई नो अमीनो एसिड एंड फंक्शंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन। तो जो नॉन कोडिंग है वो क्या करता है, वो टर्मिनेट कर देता है। देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। इन केस ऑफ लिंकेज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर टू देयर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जब लिंकेज होता है ना तो वहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है डबल क्रॉस ओवर का divided by expected, so that is known as coefficient of coincidence. Last one for the day is coefficient of interference, 1 minus the value of coefficient of coincidence in case of linkage. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up. Till that, take care. Bye bye.